Good evening, Manish. Good evening, everyone. Is my audio video clear? Please let me know. Is my audio video clear? Alright, good evening everyone. I am Mannat Sharma from Oliveboard and जैसे कि आपको पता है हम NPS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. इकोनॉमिक सेक्शन में हम रिवाइज कर रहे हैं. सब टॉपिक्स को मैंने एक टॉपिक को मैंने लिया है और उसको हम रिवाइज करते हैं. एट द एंड वी ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस. I will also be coming up with a marathon session very soon. तो उसमें हम बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करेंगे for your exam preparation. ठीक है, तो आज का टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. वी आर गोइंग टू सी what you mean by balance of payments. We are going to see everything which is important related to BOP. Okay, before that let me tell you that we will be coming up with a marathon session. Okay, so I will be talking about the MCQs, important MCQs, so we are going to solve that. Okay, so let's start with our topic. Our topic is balance of payments. I hope my audio video is clear and please let me know in the comment section if it's clear to you. Okay then. Now, when we talk about balance of payments, look at the term. टर्म ही है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. दैट मीन्स हम पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस. तो जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, यानी कि आर ट्रांजैक्शंस with rest of the world, with the foreign countries, is recorded in what? It is recorded in our balance of payments. कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में. जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होगी, जो भी हम पे कर रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं, उससे जो हमें पैसा आ रहा है, दैट इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? इट इज रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट. इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट बोलते हैं. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये. तो इसमें हम सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, सो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. इट इज अ स्टेटमेंट और अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विद इन अ डेफिनेट पीरियड. तो जो भी मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है जो एक कंट्री की उसके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्रीज के साथ एक डेफिनेट पीरियड में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो ये क्या है? ये समराइज करती हैं सारी ट्रांजैक्शंस दैट आर कंट्रीज, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कोई गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो किसी और इंडिविजुअल कंपनीज और गवर्नमेंट बॉडीज किसी और कंट्री, उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में रिकॉर्ड होती हैं? बीओपी अकाउंट. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि किसी कंट्री के पास डेफिसिट है या फिर सरप्लस है, किसी के पास ज्यादा पैसा है या किसी के पास कम पैसा है. इससे हमें पता चलता है, इससे हमें एक इकोनॉमी का स्टेटस पता चलता है कि क्या स्टेटस चल रहा है इकोनॉमी का.
ठीक है, क्लियर है? लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। ठीक है, तो मतलब अब हम इसमें कौन से बैलेंस देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। तो पहला है आपका करंट अकाउंट। तो पहला कौन सा अकाउंट है आपका? करंट अकाउंट, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों में, ठीक है, जिसके लिए वी आर रिसीविंग और वी आर पेइंग इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, यूनिलैटरल रिसीट्स, जिससे भी हमें ये सब चीजें मिलती हैं, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? इट इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है? ये कॉम्पोनेंट्स को आपने याद करना है। फर्स्ट इज योर बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। विजिबल का क्या मतलब है? जो हमें चीज दिख रही है, विच वी आर एबल टू सी, जो टेंजिबल इन नेचर है। तो उसमें क्या आ गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं। इसे हम बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, बीओटी भी बोलते हैं इसे हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स। और जब हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स की बात करते हैं या बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड की बात करते हैं, तो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सर्विसेज हियर। So balance of trade is related to your goods, balance of invisibles is related to your services. ठीक है, इसके अलावा जो भी कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर है, कोई भी अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर है, व्हाट डज दिस मीन? जिसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, जिसे हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, बस हम इसे दे रहे हैं, या वी आर जस्ट गिफ्टिंग इट, या फिर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, यूनिलैटरल पेमेंट्स हो गई, ये कौन से अकाउंट में आती हैं? करंट अकाउंट में आती हैं। तो आपने याद रखना है कि करंट अकाउंट में हम एसेट्स और जो लाइबिलिटीज है उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑलराइट, क्लियर? द सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट इज योर कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या बात कर रहे हैं? किसी एसेट या लाइबिलिटी की क्रिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बजट में कैपिटल अकाउंट देखते हैं और रेवेन्यू अकाउंट देखते हैं, इसी तरह से हम कैपिटल अकाउंट, इसमें भी हम एसेट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या रिकॉर्ड करता है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आपकी एफडीआई, एफपीआई इसमें इंक्लूड होती है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो आपके यहाँ पे बोरोइंग्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो क्या क्या आइटम्स है इसमें इंक्लूडेड? एक हो गया एफडीआई, एक हो गया एफपीआई, यानी कि ये दोनों आपकी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। अच्छा, एफडीआई और एफपीआई, इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई? तो ये मैंने काफी क्लासेस में बहुत बार बताया है। एफडीआई क्या है? ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? मशीनरी हो गई, ठीक है, कोई भी रिलेटेड, एवरीथिंग रिलेटेड टू द कंपनी, कुछ भी कंपनी से रिलेटेड है, चाहे उसके हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे हम उसमें कंट्रोल की बात कर रहे हैं, चाहे हम इसमें ओनरशिप की बात कर रहे हैं, सब चीजों में एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है ऑफ दैट पर्सन। और अगर 10% से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू आर सेइंग दैट यू आर अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। एंड ऑन द अदर हैंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या है? जो शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब चीजें, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स में जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हमने बोल दिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और ये लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट को हमने क्या बोल दिया? एफपीआई। ठीक है, क्लियर है ये? तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो हम इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बोरोइंग है, चाहे वो लेंडिंग है, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी की क्रिएशन को हम किस अकाउंट से देखते हैं? कैपिटल अकाउंट बैलेंस से। ठीक है, क्लियर है ये? तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस से हम इसे देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। Now this, the items in capital account, they are divided into autonomous capital transactions और accommodating capital transactions. ठीक है, या तो वो autonomous है या वो है accommodating. तो autonomous का क्या मतलब है? These investments are not concerned with the surplus or deficit in the current account of BOP. Due to these transactions, there may be net inflow or outflow in forex resulting to deficit or surplus in the BOP. अब क्या है कि जो भी ऑटोनॉमस
ये जो ऑटोनॉमस कैपिटल ट्रांजैक्शन है, हम ये नहीं लिख रहे कि हमारे पास डेफिसिट है या सरप्लस है फिर हम करेंगे, हम ये नहीं लिख रहे अगर हमें पैसे की कमी है, हम इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे डेफिसिट और सरप्लस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमें करना है तो हमें करना ही है। अगर मुझे ये ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मैं करूंगी ही, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे मेरे पास पैसा ना हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब मैं अकोमोडेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस की बात करती हूँ, ये इसीलिए की जाती है ताकि हम उस डेफिसिट को पूरा कर सकें। ये क्या, ये सरप्लस हमारे पास पैसा है तो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अकोमोडेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस दे डिपेंड ऑन डेफिसिट और सरप्लस, बट ऑटोनॉमस कैपिटल ट्रांजैक्शंस दे डू नॉट डिपेंड ऑन डेफिसिट एंड सरप्लस। वो हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो वो हम करके ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो सिर्फ कैपिटल और करंट अकाउंट ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास फॉरेक्स कितना पड़ा है, यानी कि जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है वो कितना पड़ा है हमारे पास, वो भी किस में रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ही रिकॉर्ड होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एरर्स एंड ओमिशंस, तो कोई भी, अब हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं उसमें कोई एरर और ओमिशन तो होता ही है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर your BOP अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये बात? चलिए, ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट, now let's understand the types of exchange rate. So this is very important. अब exchange rate क्या होता है? First let's understand what do you mean by exchange rate. exchange rate का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर और रुपी में फर्क है, जो हम देखते हैं वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू 88 रुपीज, जो स्लिप हो गया हम आजकल देख रहे हैं न्यूज में, दिस इज योर एक्सचेंज रेट, कि आप किस रेट पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर पा रहे हैं। एट व्हाट रेट आर यू एबल टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर द अदर, उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सचेंज रेट। अब हमने टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट देखा होगा, कुछ हो गया, एक हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक हो गया रियल एक्सचेंज रेट, एक हो गया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको हम नीर भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको हम रीर बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट है, इनमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल टिपिकल, तो इसको हम थोड़ा इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है, सिंपल टर्म्स में नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, तो जो हमने अभी बात की $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज, ये क्या है, ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट ही है, जो हम करंट प्राइसेस पे देख रहे हैं, जो प्राइसेस आजकल चल रहे हैं उन प्राइसेस पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम एक्सचेंज रेट देख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। दैट मीन्स हमने इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, we have not adjusted the inflation in this nominal exchange rate। तो इसमें हमने क्या है, इन्फ्लेशन को नहीं देखा कि कितनी महंगाई हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हमने नहीं देखा, हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि आज एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, दैट इज योर नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, so it quotes the exchange rate in money terms, so it quotes the exchange rate in money terms means the rate by which you can exchange your domestic currency with foreign currency। जो किस रेट पे आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी किसी फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर पा रहे हैं, उसे हमने क्या बोल दिया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्लियर है? अगर आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट ज्यादा है मतलब आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही कंसिडर करता है। ठीक है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्लियर है, करंट प्राइसेस पे है, जैसे हम नॉमिनल जीडीपी पढ़ते हैं उसी तरह से हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी पढ़ रहे हैं करंट प्राइसेस पे, प्लस ये इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट नहीं की। अब अगर मैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट में इफ आई एडजस्ट इन्फ्लेशन यानी कि कितना महंगाई हुई है उसको मैंने अगर कंसिडर किया, तो वो क्या बन गया, रियल एक्सचेंज। ठीक है,
तो वो क्या बन गया आपका रियल एक्सचेंज रेट। तो अगर हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया, अगर हमने बेस प्राइसेस पे देखा, करंट प्राइस नहीं, कोई बेस प्राइस को पुराना प्राइस से हमने कंपैरिजन किया, तो हम उसे क्या बोलेंगे रियल एक्सचेंज रेट। तो ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो क्या कर रहा है ये, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए अब जो इन्फ्लेशन रेट, जो प्राइसेस इंडिया में है, जो इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4.4% के अराउंड चल रहा है इन्फ्लेशन रेट, या मान लीजिए 4% इन्फ्लेशन रेट मान के चलते हैं इंडिया में है, यूएस में इन्फ्लेशन रेट से 2 to 3% है, फॉर एग्जाम्पल, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम टेकिंग। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कुछ और है, वहां पर इन्फ्लेशन कुछ और है, तो इसको भी तो एडजस्ट करना है ना, ये डिफरेंस ऑफ प्राइस लेवल, इसको भी तो एडजस्ट करना है। वो हम किसके थ्रू करेंगे, रियल एक्सचेंज रेट के थ्रू करेंगे। तो किस तरह से हमने रियल एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट किया, जो भी आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, जो भी आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, मैंने उसको डोमेस्टिक प्राइस से और डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस, इससे हम क्या है एडजस्ट हो जाएगा आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट टिल हियर, anyone any doubt, you can write in the comment section if you're not able to understand, या फिर अगर आपको कुछ रिपीट करवाना है, कुछ भी है, you can ask me. Ramkrishna Singh, please explain in English. So, okay, let me explain you. Nominal exchange rate. What is nominal exchange rate? When we are seeing the exchange rate, यानी कि we are seeing that at what price you can exchange your currency with the other currency. At what rate you are able to exchange your currency with the other currency, of the other country. That is your nominal exchange rate. Now, when you see it in current prices, that is called your nominal exchange rate. That means you are not adjusting for inflation rate. But in case of real exchange rate, you are adjusting inflation. That means you are seeing the difference between the inflation. For example, in India, the inflation rate is different, and in some other country, the inflation rate is different. So you have to adjust that as well, right? You have to adjust that inflation. How are you going to do that? You're going to multiply, with your nominal exchange rate, you're going to multiply domestic price upon foreign price, and if you solve that, you're going to get real exchange rate. So real exchange rate is in terms of reality, that in reality, what is the exchange rate after adjusting the prices, after adjusting the price level in the two countries. That is how you calculate real exchange rate. Okay? Clear? Clear? So, it indicates the ratio of items purchased in the domestic market to the items purchased in the foreign market. ठीक है, तो ये है आपका real exchange rate. Clear? Now there is a term called effective exchange rate. Effective exchange rate क्या है अब? It is the measure of strength of one currency to other currencies in the international market. तो जब हमने when we were talking about nominal exchange rate and real exchange rate, उसमें we are seeing our currency with respect to the other currency. That means we are talking about one-on-one. One-on-one. We are talking about one-on-one, right? Our currency in relation to, say, the currency of US, or in relation to the currency of China. That is what we are saying. What we are seeing in nominal exchange rate and real exchange rate. But are we trading only with one country? हम सिर्फ एक कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, हम काफी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं. We are trading with many countries. So now we are going to see, when we see our currency with respect to the currency of our trading partners. जब हम जितने भी पार्टनर्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, जब हम उस करेंसी को बाकियों की अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. Okay, so one currency, our domestic currency with respect to other international currencies. So, it indicates the strength of Indian rupees on average compared to currencies of our trading partners.
So what is it saying? It is saying that how much rupees can be exchanged with other currencies, our trading partners. Okay, so we are not only seeing one on one, we are seeing our currency with so many other trading partners' currencies. Okay, now like we did nominal exchange rate, similarly we have nominal effective exchange rate, and similarly we have real effective exchange rate. Now in case of NEER, we are not adjusting for inflation. So we are not adjusting for inflation. That means we are not taking inflation into account. हम नहीं देख रहे कि exchange rate जो price level है उसमें क्या फर्क है. We are not seeing that. But in case of real, that is your real effective exchange rate, we are considering inflation. So we are considering the price level. हम price level भी देख रहे हैं, price level को भी consider कर रहे हैं. तो real terms में हमें क्या है, REER देखने को मिलता है. Okay. Then we have nominal effective exchange rate. What is nominal effective exchange rate? Unadjusted weighted average rate at which one country's currency exchanges for a basket of multiple foreign currencies. So what is it? It is a weighted average, from our country's currency with many other currencies. Okay, clear? And we are not adjusting for inflation. In this case, we are adjusting for inflation. So, when we multiply NEER with the relative price, domestic price upon foreign price, domestic price upon foreign price, if we multiply with that, we are going to get REER. तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, REER. So I hope this is clear. So when we talk about nominal exchange rate, we are seeing one on one. Our currency with respect to other countries' currency. For example, $1 is equal to how many rupees? So that is one on one. But when we talk about effective exchange rate, तब हम क्या देखते हैं? Our currency with respect to other currency. उसमें भी एक nominal है, एक real है. In case of nominal, we are not adjusting for prices. This is in case of current prices. We are seeing it in case of current prices. We are not adjusting for inflation. But in case of REER, we are adjusting for inflation. This is in real terms. Clear hai? Is it clear? Is it clear? Okay, then let's move forward. Now, another important concept is of purchasing power parity. Now, what is purchasing power parity? Now, in this case, try and understand what we are doing in this case. Now, we are going to take a basket. For example, we have a basket. We are going to add in the products that we trade in. जो भी हम products में trade करना चाहते हैं, उसका हम एक basket बना लेंगे. For example, इसमें कोई 10 items है. For example, ठीक है? For example, there are 10 items in this basket. अब इन 10 items को खरीदने के लिए, to buy these 10 items, how much money am I paying in India? For example, I am paying 100 rupees in India for this basket of items. Okay, this for this basket of goods. मैंने क्या किया? 100 rupees pay कर रही हूँ 10 items के लिए. On the other hand, if I talk about US, they are suppose paying $20 for this same basket, same items, same basket of goods, same basket of items. But the people in US are paying $20 and people in India they are paying rupees $100. So what are we comparing? हम एक basket of goods को compare कर रहे हैं, हम items को compare कर रहे हैं. We are comparing the items. And then when we take out the exchange rate, for example, we are saying $20 is equal to 100 rupees. So how much is $1 going to be? Well, how much is $1 going to be? Rupees 5. Right? So this is how your according to your purchasing power parity, this is how your exchange rate is determined. So what are you taking? आप एक क्या कर रहे हैं? एक basket of goods ले रहे हैं. Whatever you are trading in, you are taking a basket of items. For example, we have taken 10 items that we are trading in. The same 10 items are available in US. Now, how much are you paying in India for the same basket of goods, and how much are you paying in US for the same basket of goods? तो उसको हमने क्या बोलते हैं? Purchasing power parity. जब हमने break it down towards the currency exchange, that is called your purchasing power parity. ठीक है?
So what is it? Rates of currency conversion that try to equalize the purchasing power of different currencies. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो कंट्रीज की जो करेंसीज है, उस जो दो कंट्रीज की जो परचेजिंग पावर है, what we are doing, we are trying to equalize the purchasing power. We are talking about the purchasing power. That purchasing power for these 10 items is rupees 100 in India, and in the US it's $20. So what is this? This is your purchasing power. Okay, this is what is called purchasing power, and this is how your purchasing power parity is calculated. अब ये भी purchasing power parity भी two types की है. एक है absolute purchasing power parity. One is your absolute purchasing power parity and the other is relative. So when we do not account for inflation, we call it absolute PPP, कि हम inflation को adjust नहीं कर रहे. But in case of relative PPP, we are adjusting inflation. That means हम price level के increase को account कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि हाँ प्राइस लेवल में कितना इंक्रीज है या नहीं है. We are measuring the inflation rate. We are adjusting the inflation rate in case of a relative purchasing power parity. ठीक है? Now where is it used? Why is it used? It is used to compare GDP, labor productivity, individual consumption, cost of living in different countries. So where is this purchasing power used? जीडीपी को कंपेयर करने के लिए, लेबर प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए, इंडिविजुअल कंजम्पशन कितना है उसे कंपेयर करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग, टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज. फॉर दैट आल्सो वी आर यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी. ठीक है? एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल करेंसी पर यूएस डॉलर. So I hope purchasing power parity is clear. Now, mostly students have an issue with this only कि purchasing power parity नहीं समझ आया. इसमें थोड़ा सा issue आता है. Then issue आता है कि REER और NEER क्या है. तो I hope I have made that clear. तो effective exchange rate और exchange rate में difference है. What is exchange rate? जो हम one on one देख रहे हैं. What is effective exchange rate? When we are seeing one currency with respect to many currencies, not just one currency. That is your effective exchange rate. Your purchasing power parity is we are taking up a basket of goods, we are taking up a basket of items and we are comparing the purchasing power of people. हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि वो कितने पैसे में उसे खरीद पा रहे हैं in different countries. That is your purchasing power parity. Is that clear? I hope this is clear to you all. Now let's see. There are three types of exchange rate systems. One is your fixed exchange rate system. एक है आपका flexible exchange rate system and the other is your managed floating rate system. So what is your fixed exchange rate system? So it is the rate of exchange which is fixed by the government. अब fixed है यहाँ पे word, we see the word fixed. That means it is not going to fluctuate. It is not going to fluctuate. The fixed exchange rate system, it is not going to fluctuate. If you have decided that $1 is equal to 50 rupees, this will not change. ये change नहीं होगा. If $1 is equal to 50 rupees, तो ये नहीं change होगा. So it was fixed by the government. So it was fixed by the government. That means it was regulated by the government. That means it was not left to the market forces of demand and supply. ये हम खुद रेगुलेट करें, यानी कि गवर्नमेंट का रोल इसमें काफी हाई है. सेंट्रल बैंक का रोल इसमें काफी हाई है, राइट? अब फिक्स एक्सचेंज रेट भी दो टाइप, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी टू टाइप्स में हम देख सकते हैं. वन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड द अदर इज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, तो इसमें हम जो करेंसी है उसकी वैल्यू किससे पेग कर रहे हैं? गोल्ड से पेग कर रहे हैं. वी आर पेगिंग इट टू गोल्ड. कैसे? हमने एक गोल्ड की वैल्यू निकाली. We have taken gold की value. How much money are you paying for 1 gram of gold? For example, you are paying 10 rupees for 1 gram of gold. Okay, and US is paying say $1 for 1 gram of gold. For example, US is paying 1 gram for $1 for 1 gram, and in India you're paying 10 rupees for 1 gram of gold. So what is your exchange rate? $1 is equal to rupees 10. तो ये है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. तो गोल्ड में क्या किया हमने? गोल्ड की एक वैल्यू ले ली, उसको खरीदने के लिए सपोज मैंने 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ले लिया, उसको खरीदने के लिए मैं इंडिया में कितने पैसे दे रही हूँ
उसी को खरीदने के लिए मैं यूएस में कितना पैसा दे रही हूँ, दैट इज योर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, एंड थ्रू दैट वी डिफाइन द एक्सचेंज रेट। तो उस समय क्या था, ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट था। दूसरा क्या है आपका, ब्रेटन वुड्स। अब ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या था, आप गोल्ड को हटा देते हैं, गोल्ड को नहीं देख रहे हैं हम गोल्ड के बजाय हम यूएस डॉलर को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम अपनी करेंसी किससे पेग कर रहे हैं, वी आर पेगिंग इट विद द यूएस डॉलर, बिकॉज यूएस डॉलर को हमने माना कि इट इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी, सो वी आर गोइंग टू पेग आर वी आर गोइंग टू पेग आर मनी, आर एक्सचेंज रेट, वी आर गोइंग टू पेग आर करेंसी विद द यूएस डॉलर। तो इसमें हम डायरेक्टली यूएस डॉलर से, इसके बजाय यूएस डॉलर के बजाय यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल हम युआन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल या फिर यूरो ले लेते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल यू आर पेइंग 3 euros, for example you're paying 3 euros for 1 gram of gold, and India is paying 10 rupees for 1 gram of gold. तो इसमें क्या हो जाएगा, if 3 or you can say you can take up 5 euros, इजी करने के लिए, समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप 5 euros पे कर रहे हैं फॉर 1 gram ऑफ गोल्ड, ठीक है, एंड इंडिया में 10 rupees 10 फॉर 1 gram ऑफ गोल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, 5 euros इज इक्वल टू 10 rupees, that means 1 euro क्या है, is equal to 2 rupees. This is how your exchange rate was determined. But in case of Bretton Woods, it was directly pegged to the US dollar. So in case of gold, we were taking up the US dollar. For example, for 1 US dollar, India is paying 10 rupees, and for 1 US dollar, you are paying 5 euros. So what is your exchange rate? Rupees 10 is equal to 5 euros. So this is going to be 1 euro is equal to how many? 2 rupees. This is how in case of your Bretton Woods system your exchange rate was determined. तो किस तरह से हमने Bretton Woods में हमने क्या किया, गोल्ड को नहीं, हमने यूएस डॉलर को यूएस डॉलर से पेग किया और हमने एक्सचेंज रेट निकाला। इन केस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड हमने गोल्ड को गोल्ड से पेग किया। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? चलिए, then we have the flexible exchange rate system. Flexible exchange rate system means we are not dependent on the government is not intervening, we are leaving everything on the demand and supply forces. हम क्या कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के ऊपर सब छोड़ रहे हैं। We are leaving it on the on the market, we are leaving it to the market that according to the demand and supply आपका exchange rate determine हो जाएगा, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। So it is determined by the market demand and supply, और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पे डिपेंड करता है, इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं हम, कि छोड़ दो अपने आप एक्सचेंज रेट अपने आप ही it will equate itself. The exchange rate will be decided based on the market demand, based on the market supply. Clear? Now, which is the currently what do we follow? We follow the managed floating rate system. Now, what is managed floating? Floating, you can say it is fixed also, it is flexible also, but if there is an issue, if there is a problem of instability, अगर कोई issue है तो then you are going to manage it. तो ये है मतलब, this is the meaning of managed floating. So you are leaving everything to the market forces, but whenever there is an intervention required of the government, then the government is going to intervene. The government is going to manage, the government is going to stabilize the economy by managing the exchange rate. Okay, so it is a mixture of flexible exchange rate. It is a mixture of flexible exchange rate, which is the floating part, and the fixed exchange rate, the managed part. And India is in use of this managed floating system. So whenever somebody asks you India follows which kind of exchange rate system, you are going to say that it follows the managed floating exchange rate system. All right, clear? I hope you don't have any doubts now. If you have, then you can please ask me in the comment section. Okay then, if you have understood, all those who are watching, I want answers from you. Try and solve these questions.
The difference between exports and imports. The difference between exports and imports is known as balance of trade, balance of payments, balance of services, balance of goods, all of the above. Try and solve this question. I'm waiting for your answer. We are asking difference between exports and imports. What is it called? It is asked in the PYQ. That is why I'm asking you. Manish, Ramkrish, I want answers from you. What is the difference between exports and imports? I want all of you answering. So when we simply try and understand the difference between exports and imports, what is it called? The answer is balance of trade. So I talked about BOT. What is balance of trade? Exports minus imports is called your balance of trade. Okay, next question. What is the primary purpose of recording balance of payments? What is the purpose of recording BOP? First, to determine a country's GDP, to determine a country's GDP, to analyze the effectiveness of fiscal policy, to assess a country's international economic transactions, to regulate the stock market, or to monitor unemployment rates. Try and solve this question. What is the answer to this question? What is the reason? What is the purpose of recording balance of payments? Is it to determine the country's GDP? Is it to analyze the effectiveness of fiscal policy? To assess a country's international economic transactions? To regulate the stock market or to monitor unemployment rates? So NM says the answer is 3. So absolutely correct. To assess country's economic transactions. Very good. Absolutely correct. Next. Which system of exchange rate involves a mixture of fixed and flexible exchange rates? So which kind of exchange rate are we talking about? Are we talking about fixed exchange rate, a flexible exchange rate, managed floating rate system, gold standard system, or the Bretton Woods system? What is the answer to this question? So when we are talking about both the features of fixed exchange rate also and flexible exchange rate also, what kind of system is that? So Komru Girish is saying 3, managed floating system, and absolutely correct. So there are both the terms are there, managed also, which is the feature of a fixed exchange rate system, and float, which is the feature of a flexible exchange rate system. Absolutely correct. Good. What does NEER stand for in the context of exchange rate? What is the full form of NEER? National Effective Exchange Rate, Nominal Effective Exchange Rate, New Economic Exchange Rate, Normalized Effective Exchange Rate, or Net Export Effective Exchange Rate? So Komru says 3, but 3 is not the correct answer. It is not new. Manish says second is the answer. So nominal effective exchange rate. Absolutely correct. So nominal effective exchange rate is the correct answer. Okay. So NEER is nominal effective exchange rate. REER is real effective exchange rate. NER is nominal exchange rate. RER is real exchange rate. Absolutely correct, Manish. So that's it for today. So we tried to solve these questions. We tried to see what BOP is. I hope it is clear to you. Very important. You should know what the balance of payments is. What is the definition of it? You should know the structure of BOP. Very important. Current account balance. What all does it have? What do you mean by BOT? What is balance of merchandise? What is what is what are interest, dividends, profits, where are they included? All these things. Okay, then we have the capital account. You have to know what are autonomous capital transactions or what are accommodating capital transactions. You need to know that. Foreign exchange reserves are also included. Yes, Manish, tomorrow is Wednesday. Yes, there will be a live mint session in the morning at 8 a.m. From 8 to 9, we have the live mint session, so we're going to see you tomorrow in that.
Then types of exchange rate is also important. Nominal, real, need, read, very important. Purchasing power parity. I hope you're able to understand what I explained. You just remember this basket and you'll be able to remember it. Okay. Then the exchange rate systems, very important. Okay. Okay, then that's it. Tomorrow I'm going to take up, as Manish asked, I'm going to take up live mint analysis. So at 8 a.m. in the morning, we have the live mint session every Monday, Wednesday, and Friday, wherein we try to cover the most important news related to economy and finance from the newspaper, the live mint. So I hope to see. I hope I'll see you guys over there. Morning at 8 a.m. Good evening, Khushbu. Good evening. So, does anyone want to ask any question? If anyone has any question, you can ask me in the comment section. I am waiting. So we are doing, this economics revision series every day. So we take up, we take up a few questions, we take up some topics, and we study it every day. I am taking each and every topic. We revise it first, and when we then we solve 3-4 questions. Now I'm also going to bring up a marathon session where we are going to take up all the topics and we are going to solve some questions. I hope you'll be I hope you'll be present there, and I'm going to see you over there in that class. It will be scheduled soon, and before that we can just complete the syllabus, and then you attend that class and try to solve the questions. All right. Of course you can crack grade B if you practice, if you work hard, if you cover the news properly, if you study properly, cover the important topics, the static portion, the current portion. Of course you'll be able to do it. Manage your time and study hard. Everything is going to be possible. Okay then, take care everyone. All the best. I'll take your leave.